Hello students, we are doing the fourth lesson of science, that is plants around us. And today we will revise what we have learned in this chapter. So first of all, we have in this chapter we have discussed about the different habitats of plants. Now habitat means the place where a living thing lives most comfortably. That is its habitat. So we have discussed about the terrestrial plant, that is the plants that live on land, and about the aquatic plants, that is aqua means water. So aquatic plants means the animals that live or grow in water. Now terrestrial plants are further classified into plants of hills, plants of plains, plants of desert, plants of marshy areas, and plants of hot and wet regions. What are the special features of plants of hills that we have discussed? And that are they are tall and straight. They are tall and straight and generally have conical shape. So this is the most important and main feature of plants of hill, that they have conical shape. They are tall and straight, and because of it the snow does not get deposited on them. So this conical shape help them, and they have narrow and needle shaped leaves. Their leaves are narrow and needle shaped. So this is also one of the feature of those plants which grow on hills. Then we have discussed about the plants of plains, that is they have many branches. They have many branches. There is only one feature, nothing special in it. And then we have discussed about the plants of hot and wet region. So here the plants of hot and wet regions are also called evergreen trees because they shed their leaves gradually. They shed their leaves gradually. धीरे धीरे अपने leaves गिराते हैं और पूरा साल वो green रहते हैं. That's why they are called evergreen trees. Then we have discussed about the plants of marshy areas, and mangrove is the plant that grow in marshy areas. They have a special roots, and that are called aerial roots, and those roots are coming out from the soil to breathe, and that's why it is called the breathing roots. So mangrove have a special roots जो कि वाटर से, पानी से बाहर आती है सांस लेने के लिए, and they are also called aerial root. Then we have discussed about the plants of desert areas. This is very special because desert area is a place where there is a scarcity of water or there is a very little water. So it is very difficult to survive in that area. डेजर्ट एरिया में सरवाइव करना इजी नहीं होता क्योंकि वहां पर पानी बहुत ही कम होता है. तो इसलिए हमको वहां पर बहुत ही कम
प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें कुछ खास बात होती है जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट। उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और उनकी रूट्स भी बहुत डेवलप होती है। डेवलप मीन्स बहुत लॉन्ग होती है एंड ज़मीन के बहुत नीचे तक जाती है, जो कि ताकि पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके। और उनकी जो रूट्स स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और अपने अंदर वाटर को स्टोर करती है, जिससे उनको पानी की कमी ना हो। एंड they have spines instead of leaf. That is the most important thing is spines, because जो leaves होते हैं वो पानी को वेस्ट करते हैं और जो spines, इस वजह से leaves की जगह उनमें spines, कांटे होते हैं और वो कांटे पानी को वेस्ट नहीं होने देते। Then we have discussed about the aquatic plants. Aquatic plants, as I have told you, that the plants that grow in water, and they are further classified into two categories, that is floating and underwater plants. And floating plants are again have of two types: free floating plants. Free floating ऐसे plants जो फ्री फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, because their roots are not attached to the soil or anywhere. And the special feature of these free floating plant is they have air filled cavities in their leaves and stem. So this is the special feature of the free floating plants कि उनके लीव्स और स्टेम में हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं और फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर। Then is your fixed aquatic plants. Fixed aquatic plants, you all know fixed means जो एक जगह पर फिक्स होते हैं और सॉइल से उनकी रूट सॉइल में होती है जो पानी के नीचे होती है। And what is the special feature of those plants? They have stems with holes and their leaves are broad. So उनकी स्पेशल चीज ये है कि उनकी जो स्टेम होती है उसमें होल्स होते हैं और उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। एंड देन द अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स मीन्स जो पानी के नीचे ही ग्रो करते हैं, हमें पानी के ऊपर नहीं दिखते हैं। एंड द स्पेशल फीचर of those plant is they have pointed and strap like leaves. और उनकी जो लीव्स होती है वो पॉइंटेड और स्ट्रैप लाइक होती है। और जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये वाटर में ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, बाकी प्लांट्स के जैसे। बट द थिंग इज ये पानी में करते हैं, जिसकी वजह से जो फिश होती है या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है जीने के लिए। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स मीन्स कि प्लांट्स को कैसे उगाना है, फार्मर्स कैसे उगाते हैं अपनी फील्ड्स में। सो we have discussed that farmers first of all dig the soil and loosen it. So the first step to cultivate the crop is that we dig the soil and loosen it to make it soft. This is the first step, and what we use for it is plow, and this process is called plowing. So जो
मिट्टी को खोदना है, उसको लूज करना है, सॉफ्ट बनाना है, उसे हम बोलते हैं प्लोइंग। और प्लोइंग हम लोग किससे करते हैं? प्लो से, हल से, और विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर्स भी यूज किए जाते हैं आज के दिन। प्लोइंग के बाद हम उस फील्ड में सीड्स डालते हैं। सो प्लोइंग इज फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स, and then what we have to keep it in mind is the seeds should be drop in right amount and at a regular distances, proper distances पे होने चाहिए seeds, so that सारे seeds को proper nutrients मिले और वो अच्छे से grow कर पाए। After that the field is then watered, फिर हम फील्ड को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें पानी देते हैं। एंड आफ्टर दैट स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम दोज सीड्स। बट सीड्स के साथ कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स आ जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वीड्स। यस, वी कॉल देम वीड्स। एंड उन वीड्स को हमें निकालना पड़ता है बिकॉज वो हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स सारा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। एंड वी रिमूव दोज वीड्स और अनडिजायरेबल प्लांट्स, एंड देन द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। और फिर हमको उनसे अनाज मिलता है या वट एवर क्रॉप वी हैव grown in the field that we get, और हमको मिलता है। So this is all about the chapter, what is in the chapter or lesson. And tomorrow in the next video we will discuss the exercise of this lesson and the question answer. Thank you.